अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, अभी आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी का ग्राफिक कार्ड उसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, या आप अपने पीसी के ग्राफिक कार्ड रिप्लेस कैसे कर सकते हैं अगर वो ख़राब हो गया है तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के बिल्कुल सामने एक ये डेल का मिनी पीसी पड़ा हुआ है। ये Core i7 है। ये बेसिकली मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। उसने मुझे दिया था कि इसका ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है। बेसिकली इसके अंदर अभी जो ग्राफिक कार्ड डला हुआ है वो 512 MB का डला हुआ है, जो कि बिल्कुल ही बेकार एक थका हुआ ग्राफिक कार्ड होता है। तो अभी मेरे फ्रेंड ने के पास जो है एक दूसरा पीसी पड़ा हुआ है, वो Core i7 की 3rd जनरेशन है। तो उसमें आज उसने बिल्कुल ब्रांड न्यू उसने एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड डलवाया। अब उसकी स्पेसिफिकेशंस मुझे नहीं पता कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसका पुराना वाला निकला था। ये बेसिकली ये है एनवीडिया का DDR3 1 GB एंड 64 बिट्स है ये। तो ये मुझे उसने कहा था कि ये मुझे जो ये छोटा वाला जो पीसी इसके अंदर ऐड कर दो, ताकि इसको भी मैं अपना जो है स्टैंड बाय करके रखूँ एक ऐसा अपना सेकंड पीसी। तो अभी यही ग्राफिक कार्ड बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर ऐड करूँगा, और आप लोगों को मैं आगे चल के ये भी बताऊँगा कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है वो आप इसके नेट पर से कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पीसी का इस ऊपर का जो टॉप कवर है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये पीसी का टॉप कवर मैंने रिमूव कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा डेल ने इसका हार्डवेयर अंदर से डिज़ाइन किया हुआ है। और जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है ग्राफिक कार्ड का। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस तरह से अगर आप लोग अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड ऐड करना चाहें, या आप लोग अपने पीसी में से जो मतलब ग्राफिक कार्ड उसका रिप्लेस करना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइस, डेस्कटॉप में और जो टावर पीसी होता है उसमें तो बहुत फ़र्क होता है ग्राफिक कार्ड लगाने का और मतलब निकालने का। उसका निकल आया है। अब मुझे क्या मैं क्या करूँगा, ये पट्टी मेरी रिलीज़ होगी तो बस मैं पट्टी को उतार लेता हूँ उसके ऊपर से। तो ये वाला ग्राफिक कार्ड को मैं इसको साइड पे रख देता हूँ, और ये वाला जो हमारा ग्राफिक कार्ड है इसको अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ अभी क्या करना है हम लोगों ने। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पट्टी जो है थोड़ी सी
आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अगर गलत लग गया तो ये इसकी जो पीसीबी है ये क्रैक भी हो सकती है। आप लोग कोशिश करें आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें। ये देखें गाइस, ये मैंने इसके अंदर फिक्स कर लिया हो जाएगा। जब आप लोगों का डाउनलोड होना स्टार्ट के जब हो जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आप लोगों ने अपने फाइल्स वाले ऑप्शन में जाके और डाउनलोड्स में जाके, जिस तरह से मेरा ऊपर ये शो हो रहा है,
आप लोगों ने सिंपली जो है उसको खोल के उसको आप लोगों ने रन कर देना है। आप लोग जब रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही अपने जितने भी उसको ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होंगे वो खुद ही डाउनलोड कर देगा। बस दैट्स इट, इतना सिर्फ आप लोगों को काम करना है और कुछ नहीं करना। आप लोगों का ग्राफिक कार्ड जो है आपके पीसी के साथ लिंक हो जाएगा। तो बस गाइस फाइनली आज की वीडियो यही तक थी। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर गाइस प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि पीसी में ग्राफिक कार्ड डालना बहुत ही आसान बात है और उसके ड्राइवर्स जो है वो भी लोड करना बहुत ही ईजी बात है, हर कोई कर सकता है। तो सारे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा।